So today we are going to start a new topic, revisiting quadrilaterals. Revisiting quadrilaterals. What we're going to study over here, quadrilaterals and its types, properties of different types of quadrilaterals, angles and property of quadrilateral. We're going to study in this. So what is a quadrilateral? Quad means four, lateral means sides. So quadrilateral is a polygon having four sides. It is polygon having four sides. क्वाड्रिलेटरल नंबर वन पैरेललोग्राम. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल नंबर वन पैरेललोग्राम. What are the properties of parallelogram? Opposite sides are equal, opposite sides are parallel, opposite angles are equal, adjacent angle is supplementary, diagonal bisect each other. अब देखो, opposite angles are equal, angle A is equal to angle C, angle B is equals to angle D. Adjacent angle means angle on the same side, angle A और angle D का सम 180, एंगल सी और एंगल डी का सम 180, एंगल बी और एंगल सी का सम 180, एंगल ए और एंगल बी का सम 180. एंगल ऑन द सेम साइड सम इज 180. सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री. क्लियर? रोम्बस. फिगर नंबर 2, रोम्बस. Properties of rhombus. All sides are equal. Opposite sides are parallel. Opposite angles are equal. Adjacent angle sum is 180 degree. Now, diagonal bisect each other. Diagonals are perpendicular to each other. Diagonal bisect angle at the vertex. एक और चीज नोट करने वाली बात है पैरेललोग्राम में. Diagonal bisect each other इसमें भी होता है. It means AO is equal to OC, OD is equals to OD. Similarly, rhombus में diagonals are perpendicular to each other. Extra thing ये है. Diagonals are perpendicular to each other. Diagonal bisect the angle at the vertex. It means ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर. ठीक है. These two properties are important one. Now, figure number 3, rectangle. Opposite sides are equal. Opposite sides are parallel. Each angle is 90 degree. Diagonal bisects each other. Diagonals are equal. यहाँ पे diagonals equal होते हैं. Rectangle से diagonals equal होना चालू हो जाते हैं. Figure square. Square. The properties of square. All sides are equal. Opposite sides are parallel. Each angle is 90 degree. Diagonal bisect each other. Diagonals are equal. Diagonals are perpendicular to each other. Diagonal bisect the angle at the vertex. ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर. ठीक है. हाय मथी हाउ आर यू? फाइन, गुड. ठीक है. दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. नाउ काइट प्रॉपर्टी. टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. ये वाली साइड इसके बराबर, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल. ये वाला एंगल इसके बराबर. ठीक है. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर किस किस में होते हैं डायगोनल्स? स्क्वायर, रोम्बस एंड काइट. लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर वन. ये वाला दिस पोर्शन यहाँ से यहाँ तक इज इक्वल टू दिस वन. लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल एट द वर्टेक्स. ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर. ठीक है. So, parallelogram is further divided into rhombus and rectangle, and all the properties of rhombus and rectangle comes in square. Trapezium is a quadrilateral in which one pair of side is parallel. Kite की properties हमने पढ़ ली है.
So what is a parallelogram? A quadrilateral in which opposite sides are parallel is called a parallelogram. आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है. Properties of parallelogram: opposite sides are parallel and equal. Opposite angles are equal. Angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. ठीक है? Clear to each and everyone? Now, all sides are equal in square and rhombus. Opposite sides are parallel and equal in all of the above. Opposite angles are equal in all. All angles are equal in square and rectangle. Diagonals are equal in square and rectangle. Diagonals are perpendicular in square and rhombus. Diagonals bisect each other. ये important thing है. Diagonals are perpendicular सिर्फ square और rhombus में होते हैं और kite में होते हैं. Kite यहाँ पे दी नहीं है. Diagonal bisect each other in rectangle, square and rhombus. Angles are supplementary सभी में होते हैं. So this is very important. Clear? Write down this in your copy. Moving on further, what we have studied till now: quadrilateral and its types, properties of different types of quadrilateral. Now angle sum property. The sum of all the interior angles of quadrilateral is 360 degree. Angle A plus angle B plus angle C plus angle D is 360 degree. So the sum of interior angles of quadrilateral is 360 degree. कैसे आया? A quadrilateral is divided into two triangles. दो triangles में divide हो गया quadrilateral. So angle sum of triangle number 1 180, angle sum of triangle number 2 180, दोनों को ऐड करेंगे on adding both the triangles 180 180 360 degree. Clear? Find the value of x. Find the value of x by using the angle sum property. 57 plus 15 plus 4x plus 137 plus 97 is 360 degree. So 300 plus 4x is equal to 360 degree. 4x is equal to 60 degree. The value of x is 60 by 4, that is 15 degree. The value of x is 15 degree. Now, what is the measure of angle BAC and angle BDC? By linear pair property, what is the value of angle BAC? 180 minus 68 is 112. So angle BAC is equals to 112 degree. 180 minus 68 112. ये 112 आ गया. This is the symbol of 90 degree. अब this question mark plus this angle is 180 degree. देखो ध्यान से, angle BDC plus y plus 48 is equals to 180 degree. Angle BDC will be equal to 180 minus 48 is how much? 132. So angle BDC will be 132 minus y. So by angle sum property, 112 plus 90 plus 132 minus y plus 2y is equal to 360 degree. Adding all the angles, कौन कौन से angles? 112 plus 90 plus 132 is 334. 334 plus y is equals to 360 degree. Angle y is equals to 360 minus 334. So 360 minus 334 is 26. The value of angle y is 26. हमको क्वेश्चन मार्क निकालना है, that is 132 minus 26. So 132 minus 26 is how much? It is 106. Our answer is 106 degree. BDC, BAC is 112.
Clear? What is the measure of angle BDC? ये वाला एंगल निकालो by linear pair property. 59. Now by angle sum property, the value of angle B is 117. The value of angle B is 117 degree. ठीक है? Clear to each and everyone? Now show that all the diagonals of rhombus are perpendicular to each other. We have to show angle, this angle 90 degree. Now given that ABCD is a rhombus, diagonals AC and BD are perpendicular to each other. We have to show this. It means angle AOD 90 degree proof करना है. We know that in triangle AOD and COD, AD is equal to CD. All sides of rhombus are equal. OA is equal to OC. Diagonals of rhombus bisect each other या parallelogram bisect each other. ठीक है. OD common side. So by SSS criteria, the two triangles are congruent. Therefore, angle AOD is equal to COD by CPCT. ये वाला angle इसके बराबर है CPCT के. So both the angle sum is equal to 180 degree. So twice of angle AOD is 180 degree. So angle AOD is 90 degree. ठीक है. Clear? प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन अभी हम करेंगे बाद में. वेट अ मिनट, आई विल गिव यू द टाइम. उसके पहले जस्ट सी द प्रॉपर्टीज. Now theorem number 1. The diagonals of a parallelogram divide it into two congruent triangles. Theorem number 1. The diagonals of parallelogram divide it into two congruent triangles. कैसे? देखो, angle 1 is equals to angle 2 alternate interior angle. Angle 3 is equals to angle 4 alternate interior angle. AC common side. So by angle side angle criteria, the two triangles are congruent. By angle side angle criteria, the two triangles are congruent. Chalo, moving on further. Theorem number 2. In a parallelogram, opposite sides are equal. By CPCT, I can see that if triangles are congruent, opposite sides are equal. In a parallelogram, theorem number 3, opposite angles are equal. If the two triangles are congruent, ये वाला एंगल इसके बराबर by CPCT. Similarly, यहाँ से diagonal draw करूंगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा by CPCT. Clear? Because we have proved the two triangles are congruent. So theorem number 1, a diagonal divides into two congruent triangles. Is it true when we are going to change the diagonal? Yes, it will going to be true when we are going to change the diagonals. Clear? कन्वर्स केस. थ्योरम क्या थी? पेलोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. पेलोग्राम है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. कन्वर्स, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पेलोग्राम. Converse of theorem number 3, if in a quadrilateral opposite angles are equal, therefore it is a parallelogram. Clear? प्रूफ नहीं आएगा, अगेन आई एम टेलिंग, सिर्फ थ्योरम याद रखो. ठीक है, प्रूफ के लिए फिर भी मैं बता देता हूं. प्रूफ क्या करना है? एबीसीडी को क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है. क्या गिवन है? व्हाट इज गिवन? कन्वर्स केस प्रूफ करना है. क्या गिवन है? अपोजिट साइड्स आर गिवन इक्वल. ये वाली साइड, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल. एडी इज इक्वल टू बीसी, सीडी इज इक्वल टू एबी, एबी common side, sorry, AC common side. So by SSS criteria, the two triangles are congruent. Therefore angle BAC, ये वाला एंगल इसके बराबर. Alternate interior angles are equal. Therefore lines are parallel. Therefore lines are parallel. ठीक है. If alternate interior angles are equal, lines are parallel. Therefore it is a parallelogram. So
Quadrilateral is a parallelogram कब opposite sides are equal, opposite angles are equal. If in a quadrilateral opposite sides are equal, opposite angles are equal, therefore it is a parallelogram. Theorem and its converse. Okay, clear each and everything. Show that each angle of rectangle is a right angle. So given that ABCD is a rectangle, so रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ पैरालेलोग्राम इन व्हिच वन एंगल इज अ रेक्टेंगल, वन एंगल इज अ राइट एंगल हम लेके चल रहे हैं। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? इट इज अ पैरालेलोग्राम इन व्हिच वन एंगल इज अ राइट एंगल। हम अज्यूम कर रहे हैं एबीसीडी इज अ पैरालेलोग्राम इन व्हिच वन एंगल इज अ राइट एंगल, एंगल ए 90 डिग्री है। हमको क्या प्रूफ करना है? एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज 90 डिग्री, वी हैव टू प्रूव दिस। क्लियर? नाउ sum of co-interior angle is 180 degree. So angle A plus angle D is 180 degree. Angle A 90 है. In the starting we have assumed, so angle D is also 90. Opposite angles of parallelogram are equal. Angle A is 90, so angle C will also be 90. Angle D is 90, so angle B will also be 90. So all the angles are 90, therefore ABCD is a rectangle. Question number 2. Show that एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम। अब देखो क्या क्या गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, साइड्स इक्वल है, एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। ये वाला एंगल इसके बराबर, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। क्लियर? नाउ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू ये टोटल बाहर वाला एंगल, एंगल पी ए सी। यस और नो? अब क्या दिया है? ए डी बाइसेक्ट्स दिस एंगल, सो ये वाला एंगल इसके बराबर, आई कैन से दिस इज 3 एंड दिस इज 4, सो 3 इज इक्वल टू 4 गिवन है। सो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल फोर। आई कैन राइट एंगल वन एंड एंगल टू आर इक्वल, सो आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ एंगल टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल फोर। टू से टू कैंसिल, सो एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू, यही प्रूफ करना था। एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर इन द स्टार्टिंग। ठीक है। नाउ इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल टू और एंगल फोर कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। सो BC विल बी पैरेलल टू AD, और ऑलरेडी एक पैरेलल पेयर दिया है, CD इज पैरेलल टू AB। इफ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। क्लियर? नाउ PQRS is a rectangle. This is also important question. We have to prove this. देखो एंगल A प्लस एंगल D, ध्यान से देखना,
is equals to 180 degree. Sum of this co-interior angle is 180 degree. अब half of angle A plus half of angle D is equals to half of 180 90 degree. Half of angle A क्या होगा? Half of angle A होगा angle DAS. Half of angle D क्या होगा? Angle ADS is equals to 90 degree. मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम 90 डिग्री. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी DAS प्लस ADS प्लस DSA इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों का सम 90 है, सो 90 प्लस एंगल DSA इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल DSA इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये वाला एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री. So by vertical opposite angle, this angle is also 90. Similarly, angle P is also 90, angle Q is also 90, angle R is also 90. So if in a parallelogram all the angles are 90 degree, therefore it is a rectangle. ठीक है. वही चीज है थ्योरी पार्ट में. DSA 90, so angle PSR is 90. Similarly, all the angles are 90 degree, therefore it is a rectangle. सो हमने क्या क्या पढ़ा आज? अ क्विक समरी, उसके बाद फिर हम लोग क्विज सॉल्व करेंगे. डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ठीक है. थ्योरम नंबर 2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. थ्योरम नंबर 3, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. कन्वर्स, इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम. कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट टर्म है थ्योरम का. Now open your dashboard, start solving the assignment.